So hello students, how are you all? So today we will see how we can find our resistance by using Ohm's law, or you can find out a resistance of a wire per centimeter, that how many ohms are in 1 centimeter of a given wire. So it is your first experiment of class 12th. So now we will learn what is the aim, what are the apparatus required to doing this experiment, and at last we will draw its circuit diagram, and after we can take the observation from this whole system. You can see here, and here is one of my student, Abu Shama, and he will show you how you can find out how you can do this experiment as well. So just I am focusing on this copy to explain. So first is a aim of this experiment. So what is the aim? To find out the resistance per centimeter of a given wire by using ओम्स लॉ. यानी ओम्स लॉ को यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है एक किसी भी गिवन वायर का रेसिस्टेंस, एंड बाय फाइंडिंग द रेसिस्टेंस यू कैन फाइंड आउट द रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर, राइट. सो एम इज to find out resistance per centimeter, to find out the resistance per centimeter of a given wire by using Ohm's law, right. So what is the formula and what are the apparatus required? So formula used, the resistance per centimeter equals to total resistance divided by total length of the wire, which you have to find, and that unit will be in ohm per centimeter. Unit will be R by L is the formula, but the unit will be ohm per centimeter, right. So after that there is apparatus required. What are the main apparatus required? You can see here I have taken a battery eliminator, I have taken a connecting wire. Some of the connecting wires, here is a scale and one of the wire which you have to find the resistance, and here is a ammeter, voltmeter, some one way key. You can take rheostat also, but as here there is already a rheostat. यहाँ पे rheostat already लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं rheostat को नहीं प्रीफर कर रहा हूँ. So you can see here the apparatus used or the apparatus required to doing this experiment. First is a battery eliminator, or you can take a cell. Next one is a voltmeter. After that one way key, connecting wires, as well as ammeter, etc. And you can take also, here is a one of the main instrument which is called you can say it removes the oxidation layer or oxide layer from the wire, and at last sandpaper it is, and it is a whole apparatus required which you have to use to doing this experiment. And after that we will draw its circuit diagram for the betterment of the doing this experiment. So Abu Samaf, please draw your circuit diagram for doing this experiment. Here is a battery eliminator, symbol of battery eliminator, and the positive one will be red color. Here you can see the positive one is of red color and the black color is a negative one. So here is a red is positive and black is a negative, and after that there is a rheostat, but inside this battery eliminator there is already a rheostat, there is already a voltmeter, voltage regulator, sorry, there is already a voltage regulator. So we will not take any type of rheostat, you can see here. So by connecting this red terminal, this is the red terminal of the battery eliminator. So by using this red terminal, and the red terminal of this battery eliminator or the cell is connected to the positive terminal of the ammeter. So you can see here the positive terminal of the ammeter is here, and the positive terminal is this one. This is the red color. So we will do it all, we will connect it all after the drawing this circuit diagram as well. You can first see here the circuit diagram, and after that you can draw it
or you can connect it all as according to this diagram. So here is connection. Please do the connection. What you are doing at first, the red terminal or the positive terminal of the battery eliminator is connected to a positive terminal of the emitter, right? And after that, the negative terminal of the emitter is connected to the positive terminal of the voltmeter. You can connect it alternatively. First you can connect the voltmeter or emitter. You can connect any one of them. So here is a connection. First is a बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम लेंगे और बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल लेते हुए हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वहाँ से हम कनेक्टिंग वायर अटैच करेंगे, है ना, ज्वाइन करेंगे और लेके जाएंगे हम कहाँ पर, वोल्टमीटर के जी पॉजिटिव टर्मिनल पे। और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि इस प्रकार से हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एंड दैट वायर इज गोइंग टू attached to the one-way key, or you can also not take a one-way key because here is already a one key. You can see here already if you on the switch, if I on the switch, here is a current, but if I off the switch from the battery eliminator, the current is gone, right? You can see here, you can see. So here is not any importance of this one-way key, because here is already a one-way key as well as a voltage regulator also. Here is a voltage selector or voltage regulator. It can give a maximum DC output of 2 ampere, right? So we can just eliminate it by connecting, or you can connect it, just connect it, doesn't matter. And one thing we remember to you, that all the connections should be tightly and should not be any loose anywhere, so you can get proper reading too. And here is a circuit diagram. After that you will take a small error in, is there any error in emitter, is there any error in voltmeter, so you can give there is no error, no any types of error in. If there is a error, then you can take error also, but here is no any type of error, so we cannot take error will be taken as a 0. So here is now the next point will be how we can connect a resistance wire, for which we have to find the resistance. So this is the wire, so you can take this wire, and this is the wire of you can say it is a constant wire, or you can say it is a manganese wire, and we have to find the resistance per centimeter. So here is the main importance of this scale, and what scale can do. You can see here, you have to find the resistance. You can find out the resistance, but beside the finding the resistance, you have to also find out the total length. So you will find out the total length by using this scale, and you will fix it by scale to find out the length of this wire. This is all about I think 19 centimeter. You can see here 19 centimeter, but it is there is some curves in the wire, there is some bendings in the wire, due to which we can take it as a 20. So the total length of the wire is measured as 20 centimeter. So total length is, so total length is 20 centimeter. 20 centimeter. So right, you can now do it all. You can see here, you can now do it all. If there is a not battery eliminator in your college or school, so you can take their cell, and with using cell you have to connect a rheostat as well for the regulation of the, here is a rheostat, but we have not taken a rheostat because there is already a voltage regulator, I have told yesterday already. So now we can attach this, or we can connect this wire
through the potential difference source as well as a voltmeter. You have already known that the wire is connected in a voltmeter as a parallel, so you can connect it as parallel. One thing you should be remembered, that all connections should be appropriate, and one thing is most required, that you can use sandpaper to remove the oxide layer from all the connecting wires. So you can get here a proper combination of the whole circuit. You can see here it is the total all over done connection of the whole circuit. So this is all about. So the next point is to find the observation, to result the main aim. So observation is, first in observation we will put a least count. First point is a least count of voltmeter. So you can write see here is a voltmeter which has a minimum reading can give a voltmeter is 1 volt according to the given system, but there is from 0 to 1 there is all about 10 columns, which is the minimum ammeter can be read. The minimum reading can be ammeter is, and you can see here a voltmeter is there, and the total reading it can also give a minimum 1 volt. You can see here is a 1 volt, but 0 to 1 volt there is 10 columns, so you can write here least count of voltmeter 1 volt upon 10, so it will be a 0.1 volt. It is a least count, and if there is an error, so you can also count as error, but here is not any type of error. So this student is writing the error in voltmeter equals to 0 volt. Now the third point is least count of ammeter. Least count of ammeter is, here is least count of ammeter is from 0 to 1. So here is a 10 column, you can see here is a 10 column, and after that 1 by 10 it is the 0.1 ampere, and here is also a reading error in this ammeter is 0, because when no current is supplied to this circuit, if the switch is off, so there is no any type of current flowing or no any lack of current flowing. So here is a error in ammeter is 0 ampere. So now the observation table. So it is the most important point. So we will write a observation table as this one you can see here. The first point is a serial number, and the second point will be in the second column you will write voltmeter reading, and if there is any error, so you can make another column in a voltmeter as a error, but there is no, so we can take 0 error, and the voltmeter reading will be taken as in voltage or volts, and again the ammeter reading will be taken as a ampere. So in the third column ammeter reading, and we all know that according to theory we all are using Ohm's law, so you have to apply here some formula for Ohm's law, that equals to V equals to I into R. You have already studied in class 10th, that is V directly proportional to I. If we increase the potential of a circuit, if we regulate the voltage through this battery eliminator, there is a increment in voltmeter also as well as ammeter also. So here is some of the reading, so you can take this reading. So now you can see here all the observation all as well as readings all. So first we will on the switch, this is the switch for the battery eliminator. We will on the switch, and after that we will regulate it, but here is if it is not regulated, if it is a 0 volt, then here is a both are readings 0. दोनों जो है वोल्टमीटर भी रीडिंग 0 कर रहा है और एमीटर की भी रीडिंग 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सारा कनेक्शन डन हो चुका है. ऐसे ही आप कनेक्ट करेंगे अपने कॉलेज स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में.
ठीक है, आपको थोड़ा सा दूर से दिखाया जा रहा है ये चीज़ कि यहाँ से इसका टर्मिनल पॉजिटिव यहाँ से कनेक्टेड है पॉजिटिव से, फिर इसका निगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर के पैरेलल में क्या लगा हुआ है आपका रेसिस्टेंस वायर, और वोल्टमीटर का निगेटिव किससे कनेक्टेड है आपके की से, या फिर डायरेक्ट आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि वोल्टेज रेगुलेटर या फिर रियोस्टेट का काम वो खुद कर दे रहा है ये वोल्टेज रेगुलेटर, एंड दिस वन इज़ द स्विच बाय विच यू कैन सी। चलिए ठीक है, तो अब करेंगे अब उसामा, चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्टमीटर की रीडिंग। सो फर्स्ट ही विल रेगुलेट इट, जैसे रेगुलेट करते हैं ऐसा देखा जाता है कि वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो आई थिंक अप टू 6 कॉलम्स, यस दिस इज़ अ voltmeter reading is about 6 column, so 6 multiply by the least count, 6 column multiply by least count 0.1, so it will be 0.6 volt, right? So when it is a 6 volt, then what is the current in this? What is the current? 1.2 12 multiply by 0.1, so it will be 1.2 ampere. So after that he will calculate it R as R1, so 0.6 upon 1.2, so he can get 1 by 2, right now, so 1 by 2 or 0.5. Now the next serial number is, if we on the regulate the voltage from 2 to 4, so he will see here the some voltage is fluctuating, so there is we cannot calculate as fluctuated voltage, you can take it mean, देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है ये, ठीक है ना, तो फ्लक्चुएटेड नहीं लेना है आप, नियर अबाउट 4 5 दोनों का मीन ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे यानी कि 15, सो इट विल बी टेकन एज वोल्टमीटर रीडिंग एज 15, एंड 15 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 0.1 इट विल बी 1.5, सो आफ्टर व्हेन इट इज अ 15, सो दिस वन इज अबाउट this is one about, you can see here is a 25, right, it is 25 multiplied by 0.1 2.5. As you can see the hotness of this constant and wire, it is getting hot, due to which is it have a higher resistance, so it will hot. If you can see here the hotness मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं हाथ को पास लेके जा रहा हूँ ऐसे देख पा रहा हूँ, ये एज अ हीटर एज अ इलेक्ट्रिक आयरन हीट हो रहा है ये, ठीक है ना। अगर बहुत कोई चीज़ पास में लेकर जाते हैं आप तो जल जाएंगे, इसीलिए यही एक रीज़न था कि इसका जो मैं बोल सकते हैं, मैं स्विच को ऑफ करता हूँ पहले, यही एक रीज़न था जिसके चलते मैं इसको पहले इस स्केल के सहारे मेज़र कर लिया, क्योंकि बाद में डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ती जाएगी, बाद में मेज़र नहीं कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 पर था ये, तो एमीटर की रीडिंग 2.5 एम्पियर पे आई, और यहाँ से देख सकते हैं जो रीडिंग आई R2 की वो कितनी आई 0.6। आफ्टर स्विचिंग ऑन द की you have to regulate the voltage from 4 to 6, you can see you have to take minimum 3 or 4 observations. After that you can find the average mean or the average resistance of the, so you can see here the maximum fluctuation, so maximum fluctuation you can take the mean of the fluctuation, so here is a 22 to 22 multiply by voltmeter is 22 at 22 multiplied by 0.1, so it will be 2.2, and at a 2 when it is a 2.2 it will be a I think around 34, right, so it will be a 34 column, so 34 multiply by, yes, 0.1, so it will be 3.4, and the R3 will be 2.2 upon 3.4, so 22 by 34 it will be a some like 0.64, right. So you can take a maximum 3 to 4 observation, or you can take maximum 5 observation. If you will take a more observation, your accuracy will be greater, yes. So here is some of the 3 observation. By ending the 3 observations you can find out the average mean of resistance, or the average mean of resistance, or the mean of resistance, or arithmetic mean of resistance ऑफ द रेसिस्टेंस वायर। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेसिस्टेंस वायर जिसको हमने लगाया था वो बाद में हॉट हो चुका रहेगा, और अभी इसका देख पा रहा हूँ मैं कलर भी चेंज हो गया है। पहले जो मैं लगाया था ये स्टेनलेस स्टील के कलर का था, अब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो चुका है ये, है ना, क्योंकि जैसे इससे करंट पास होती है इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है।
चलिए, तो ये रहा एवरेज मीन ऑफ रेसिस्टेंस. सो 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.64 divided by whole 3 for getting a mean. So it will be a like what is 1.74 divided by 3. So it will be 1 point not, it is not 1.31, right? Why you are doing this wrong? It will be 1 point, what is it, 0.5 plus 0.6 plus 0.64 na, 1.74. So it will be 1.74 divided by 3 na, so it will be 0.58. You are doing wrong. It will be a 0.58 ohm, right? So it will be a 0.5 ohm, 58 ohm. Now the formula is, we have already write here the formula. The formula used to resistance per centimeter, percent, not it is percent, it is resistance per centimeter, right? Per centimeter, not percent. So resistance divided by total length of the wire. So here is total resistance per centimeter equals to, resistance per centimeter equals to, yes, per centimeter equals to 0.58 divided by 20 na, I think 20 centimeter. So you will write here ohm upon 0.5 ohm upon centimeter, right? So आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आंसर आ रहा है वो किस में आएगा, ओम पर सेंटीमीटर में आएगा, और क्या आ रहा है 0.029, राइट? सो 0.029 ओम पर सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमारा पहला एक्सपेरिमेंट डन हो चुका है, और रिजल्ट में लिख लेंगे आप, है ना? सो व्हाट इज द रिजल्ट? द रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ दिस गिवन वायर, the resistance per centimeter of the given wire is हाँ, यहाँ पे है आपका 0.029 ohm per centimeter, right? So this is the observation, this is all about all. So यहाँ पे आप ऐसे इस परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को. यहाँ से पूरा फॉर्मेट आपको दिख पा रहा होगा. पहले हमने एम, फार्मूला यूज्ड, एपरेटस रिक्वायर्ड, सर्किट डायग्राम, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन क्या लिया, वोल्टीमीटर से ऑब्जर्वेशन क्या आया, एमीटर से ऑब्जर्वेशन क्या आया. इन ऑब्जर्वेशन को हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में पुट कर दिया, रीडिंग निकाल करके. रीडिंग के बाद हमारे कैलकुलेशन के पोर्शन पे आते हैं. तो कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेट कर लिया फाइनली, सारे फार्मूले को रेगुलेट करके, सारे फार्मूले को लगाते हुए 0.029 ओम पर सेंटीमीटर. एंड आफ्टर दैट हियर इज द रिजल्ट. द रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर is 0.029 ohm per centimeter. So can you explain how you can do this all as well? All the observations are correct, as well as all the calculations also is correct. And beside this, now finally you have to plot a graph. Now finally you have to plot a graph between the total potential versus total current at the each reading. हर एक रीडिंग में आप कितना क्या करे हैं, कितनी आपकी वैल्यू आई है, उसमें क्या करेंगे आप, ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ यहाँ पे आ चुका है हमारे लिए, है ना? ग्राफ ये रहा. ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि वाई एक्सिस पर हमने लिया इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एम्पियर में रहेगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 ऐसे. और वोल्टमीटर को 1, इधर भी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है वोल्टमीटर में, है ना? वोल्टमीटर की रीडिंग है, कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट्स में. सो 1 2 3 4 5 6 अप टू 7. सो हमने क्या क्या रीडिंग निकाली पहले कंडीशन में. देखें आप, पहले कंडीशन में रीडिंग क्या क्या निकल के आई है इधर. तो पहले कंडीशन में 0.6, ठीक है, 0.6 यानी 6 कॉलम आया था, ठीक है. सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, करंट पे मार्क करेंगे, सॉरी, या फिर वोल्टमीटर पे मार्क करेंगे 0.6 वोल्ट. सो यू विल सी हियर, अगर 0.6 वोल्ट मार्क करते हैं तो 0.6 वोल्ट कहाँ पर आएगा, तो वोल्टेज की रीडिंग इस पे है, तो 0.6 मार्क करना है, यानी छठे कॉलम पे हम लेंगे 0.6, यानी इस वाले कॉलम पे. 5 के बाद इस वाला कॉलम दिख रहा है, 5 के बाद ये वाला कॉलम, उस पर हम लेंगे. और जब ये 0.6 है तो इसकी वैल्यू 1.2 है, यानी कि 1.2 के लिए आप 1 से 2 कॉलम ऊपर लेंगे, और 0.6 पर यानी कहीं कहीं के यहाँ पर लेंगे. यहाँ पर जब आप करंट को देखेंगे तो 1.2 पर है,
और एक्स एक्सिस पर देखें तो क्या है, आपका वैल्यू मिलेगा 0.6। सो पहला कॉलम यहाँ पे मिला। दूसरा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी आप शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट आप शो कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो वोल्टमीटर का पहले एक्स लिखते हैं 0.6, 1.2, ये कोऑर्डिनेट है इस जगह का। अगले कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट, अगला का है 1.5 वोल्ट है। सो 1.5 वोल्ट तो कहीं यहाँ पे आ रहा है ना वोल्टमीटर की, यानी कहीं वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सो और उस कंडीशन में 2.5 क्या है, करंट है। सो इट इज़ अ 1.5, इट इज़ 2.5, सो हियर यहाँ पे कहीं रीडिंग मिल पा रही है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, ये 2.2 पर है वोल्टेज, यानी 2.2 का मतलब कहीं यहाँ पर, और उस कंडीशन में ये 3.4 पर है। तो 3.4 एंड 2.2 कहीं ना कहीं रीडिंग जो आएगी वो कहीं इधर शिफ्ट होकर के आएगी, 3.4 दैट मीन्स यहाँ पर, और 2.2, 3.4 इज़ हियर एंड 2.2 इज़ ऑल्सो हियर। सो हियर इज़ द थर्ड रीडिंग, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिला करके आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन, ठीक है। और जो लाइन जाएगी वो ओरिजिन जाएगी और स्ट्रेट जाएगी, ये आप काम खुद कर सकते हैं। सो एक पूरा एक्सपेरिमेंट डन हो चुका है। आप इसके प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर जान सकते हैं किससे, अबू सामा से। तो बताइए प्रिकॉशंस क्या क्या इसमें आपने बरते। Now first the current should be passed only a short interval of time while taking a set of reading, and second is the connection should be tight and use a low resistance rheostat. Third is the clean the end of the wire with sandpaper before making the connection. Fourth is the positive terminal of the ammeter and voltmeter should be connected to the positive side of the battery. And now last is fifth, connection should be tight. Now come on our source of error. First, the end of the wire may not be clean. Second, connection may be loose. And third, the wire may not be uniform area of cross section. And last is the V upon I may not be constant due to the excessive heating due to passage of current for a long time. As you can see, जैसे मैंने करंट को ज़्यादा देर तक क्या कर दिया है, ज़्यादा देर तक पास करा दिया, वैसे आपने देखा था कि लास्ट में जब ज़्यादा करंट पास हो रही थी तो ये जो हमारा सिस्टम था, चाहे वो वोल्टमीटर हो चाहे वो एमीटर हो, उसकी नीडल जो थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी। और फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए हम करंट पास करा देते हैं और ज़्यादा अमाउंट में करंट पास करा देते हैं, तो फ्लक्चुएशन आपको मिलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट our practical. This is our first practical, this is our first video on the practicals. We will provide you more video, all the videos for class 12th such as potentiometer, ammeter, potentiometer and meter bridge as well as prism, ठीक है। ये सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। सो थैंक यू सो मच।